Hello students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are good. So students, today we have chapter number 14 which is profit and loss. यानी कि अब आपको देख लेना है कि आपका profit हो रहा है या आपका loss हो रहा है and how you have to identify. Let's learn it together. So now we are talking about the profit and loss. So while we are talking about the profit and loss, so what we have to consider is कि whenever we purchase something, for example, I purchase a bicycle which is cost me for 1500 rupees. Okay, now I have to resell it. So for example, I resell it for 1800. It means I purchase it for 1500 but I resell it for 1800. It means it is a profit of me which is cost 300 rupees. How I calculate is my cycle cost is 1500 and I resell it with the price of 1800, and when I minus 1800 from 1500, which means 300 is my profit. Now right now I also purchase my bicycle for the 1500, but this time I resell it with the 1200. So it means this 300 it's my loss. दोनों की वैल्यू सेम होगी, 300 नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं 1400. So 1400 की मैंने उसे रीसेल कर दिया. It means कि what is the now first I have to identify this is my loss or my profit. So 1500 बड़ा है 1400, तो 1400 हमारा छोटा है कंपेयर टू 1500. इट मीन्स इट इज अ लॉस फॉर मी. एंड हाउ मच लॉस? 100 रुपीज लॉस के लिया तो 1500 का, तो फिर 100 रुपए भी उसमें कम देके फिर उसे रीसेल किया. तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लेरिफाई हो गया होगा कि हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर प्रॉफिट एंड व्हाट इज योर लॉस. यू ऑलरेडी नो द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, so this is very easy for you. Next we have profit and loss are an important part of any business whenever goods and both are sold. When a shopkeeper sells an item, he hopes to get a more money than he paid to buy that item to make a profit. But if he sells it for less than its cost price, that he makes a loss. यानी कि अगर हमने cost price से low में उन्हें buy करवा दिया, resell कर दिया, it means sold कर दिया, तो हमारा क्या होगा? वहां पर हमारा loss होगा. Cost price and the selling price, कि जिस प्राइस पर हम कोई आइटम परचेज करते हैं, that it's called cost price, और जिस किसी प्राइस पर हम अपने आइटम को सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी. नाउ हाउ वी हैव टू कंसीडर दैट कि ये हमारा प्रॉफिट है या हमारा लॉस है. सो इफ द सेलिंग प्राइस माइनस फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस, व्हिच मींस सेलिंग प्राइस इज बिगर देन द कॉस्ट प्राइस, इट मींस इट इज अ प्रॉफिट. इफ और द वाइस वर्सा ऑफ इट मींस के cost price is bigger compared to the selling price, then it means a loss for us. Raman bought a cow for 18,000 and sold it for 13,775. Did he make a profit or loss, and how much did he loss or gain? So first of all, what you have to say, this is your CP and this is your SP, cost price and selling price. CP is greater than SP, it means it is a loss. तो ये हमने clarify यहाँ पर कर लिया कि it is a loss. Next, how much loss? So 18,000 minus 13,775, which is 4,225 का उन्होंने लॉस किया है. नेक्स्ट, a shopkeeper bought a mobile for 1870. He sold it at a loss of 40 rupees. Find the selling price of the mobile phone. कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा ये है, ठीक है, बोथ यानी कि बाय किया था, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारा ये और 40 के लॉस में फिर उन्होंने वो सेल किया है, तो इट मींस 870 माइनस 40 विच इज 830 उनका क्या था? सेलिंग प्राइस था. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव कंप्लीट द टेबल. तो फिलिंग द बॉक्सेस, दिस इज ब्रेड ₹9 एंड 13 का उनका क्या है? सेलिंग प्राइस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये लॉस है या प्रॉफिट है. तो कॉस्ट प्राइस इज स्मॉलर देन टू सेलिंग प्राइस, इट मींस इट इज अ प्रॉफिट फॉर अस. नाउ हाउ मच प्रॉफिट? 13 minus 9 is 4. Right now butter price is 50 and we selling it 46. It means cost price is bigger than selling price. This is a loss for us. And how much loss? 4 rupees. So in that manner you have to complete this table. Next, Mr. Chaudhary bought a painting for 1420 and sold it for 1800. Did he make a profit or loss, and of how much? So this is your cost price, this is your selling price. Selling price is greater than cost price, it means 18,000 minus 1420. 1800 students, not 18,000, sorry. 1800 minus 1420 which means 380 रुपीस का उन्हें क्या हुआ है? उन्हें प्रॉफिट हुआ है. ठीक है.
Next we have a shopkeeper sold a watch for 470 and made a profit of 65 rupees. What was its cost price? So 470 की जो उनकी वॉच थी उन्होंने वो सेल करी है, सोल्ड करी है, और उसके बाद उन्हें 65 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है. तो हमें कॉस्ट प्राइस जानने के लिए 470 माइनस 65 कर देंगे. सो द आंसर इज 405. ओके, नाउ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज. हम परसेंटेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों इन आवर प्रीवियस क्लासेस. Now what we have to do, first of all we have to find out the loss or profit. Okay, then the formula for the profit percentage and loss percentage is this: profit as a numerator, cost price as a denominator, and we have to multiply it with 100 because percent means out of 100, right? So profit upon cost price multiply by 100, loss upon cost price multiply by 100. This is your formulas for the profit percentage and the loss percentage. Now Imran bought a chair for 400 and sold it for 450. Find his profit percentage. तो profit percent हो जा रहा है और यहाँ पर मैं देखते ही पता चल रहा है कितना profit हो रहा है, 50 rupees का profit हो रहा है. So the profit which is 50 we have to write here above the fraction bar as a numerator. The cost price is 400. This is 400. Multiply by 100 to convert it into a percentage. 0 is cancel out 0, 0 is cancel out 0. 4 को जब आप 50 से डिवाइड करोगे आंसर इज 12.5%. ओके, नेक्स्ट वी हैव फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो कॉस्ट प्राइस इज 60, सेलिंग प्राइस इज 70, मींस 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है एंड योर कॉस्ट प्राइस इज 65 मल्टीप्लाई बाय 100. सो यू हैव टू सॉल्व इट. 1 3 20, so 200 upon 13 is your, you have to solve it. This is your profit percentage. Okay, next we have 2000, 200, 500. So means 2500, which means 500 profit upon 2000 multiply by 100. 2 zeros are cancelled out with 2 zeros. 2 cancel. Your answer is 25%. Okay, find out the loss and loss percentage for each of the following. So this is your cost price, this is your selling price. So you have to minus 900 minus 650 is 250 upon 900 multiply by 100. 2 zeros are cancelled out with 2 zeros. Now you have to solve it. 250 divided by 9. This is your loss percentage. Next we have Nirve bought an old car for 1,35,000 and spent 13,000 on its repair. Then he sold it for 1,54,000. Find his profit percentage. तो फर्स्ट जब भी हम कोई एक्स्ट्रा अमाउंट अपने परचेज करी हुई ऑब्जेक्ट पर, आइटम पर डालते हैं फॉर रिपेयरिंग, फॉर मेंटेनेंस, इट मीन्स कि वो हमारे कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अभी कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना है? 1,35,000,000,031. Now you have to add 0,00538,134 this. So 1,48,000 आपका जो टोटल अमाउंट है वो है. नाउ यू हैव टू माइनस इट फ्रॉम 1,48,000 को आप माइनस करोगे फ्रॉम 1,54,000. अब यहाँ पर आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 6,000 रुपीज. तो जो हमारा परसेंटेज होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, वो क्या होगा? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 13,000. कॉस्ट प्राइस तुम्हारा वो बन गया ना, तो हम वही कॉस्ट प्राइस यहाँ पे अप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई विद 100. डबल जीरो कैंसिल आउट, डबल जीरो, सिंगल सिंगल सिंगल. यहाँ पर आपको सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू राइट योर आंसर इन दी परसेंटेज. Next, take the correct option. The name which a person spend to buy or manufacture certain goods, it's called a selling price, profit, cost price. The cost price. ठीक है? The money at which a shopkeeper sells his goods, it's called selling price. When the cost of price is more than the selling price, cost price is more than the selling price, it is a loss. When the cost price is less than the selling price, then it is a profit. So students, your chapter is end here. I hope so this chapter is clear to you. So just practice enough questions to clarify this chapter in more detail. Now we will meet in our next class with a new chapter. Till that, bye bye. Have a good day.